રાજ્યભરમાં ઠંડીનો ચમકારો યથાવત છે। રાજ્યમાં હાલ પવનની ગતિમાં વધારો થતાં ઠંડીનો અહેસાસ થઈ રહ્યો છે। આજે 10.3 ડિગ્રી સાથે નલિયા સૌથી ઠંડુ શહેર રહ્યું છે, જ્યારે અમરેલીમાં 10.8, દીવમાં 11.8, કંડલામાં 12, ડીસામાં 12.4, ગાંધીનગરમાં 12.6 ડિગ્રી તાપમાન નોંધાયું છે, જ્યારે પોરબંદરમાં 12.8, રાજકોટમાં 13.3, અમદાવાદમાં 14.4 ડિગ્રી તાપમાન નોંધાયું છે। હવામાન વિભાગે આગામી 7 દિવસ વાતાવરણમાં કોઈ ફેરફાર નહીં થવાની આગાહી કરી છે। સાથે જ ઉત્તર પશ્ચિમ ઉત્તરના પવન ફૂંકાતા કેટલાક વિસ્તારોમાં તાપમાન વધશે તો કેટલાક વિસ્તારમાં તાપમાન ઘટવાની આગાહી કરી છે। आने वाले 7 दिनों के लिए गुजरात स्टेट के सारे डिस्ट्रिक्ट कवर हैं, जिसमें ड्राई वेदर प्रिवेल करेगा। और मिनिमम टेम्परेचर की बात करेंगे तो आने वाले 7 दिनों के लिए मिनिमम टेम्परेचर नो लार्ज चेंज में रहेगा। और मिनिमम टेम्परेचर रियलाइज की बात करेंगे तो अहमदाबाद और गांधीनगर में जो मिनिमम टेम्परेचर पिछले 24 घंटा में रिकॉर्ड हुआ है वो अहमदाबाद में 14.5 डिग्री सेल्सियस और गांधीनगर में 12.6 डिग्री सेल्सियस मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ है। और हम मिनिमम टेम्परेचर की बात करेंगे जहाँ पर पूरे गुजरात रीजन पे जहाँ पे सबसे कम मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ है वो है नलिया 10.8 डिग्री सेल्सियस। और मिनिमम टेम्परेचर अहमदाबाद और गांधीनगर के लिए फोरकास्ट की बात करेंगे तो अहमदाबाद के लिए जो मिनिमम टेम्परेचर का फोरकास्ट है वो 15 डिग्री सेल्सियस और जो गांधीनगर के लिए मिनिमम टेम्परेचर का फोरकास्ट है वो 13 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का पूर्वानुमान है।